Yes. So, so let everyone join. 11 10 पे start करते हैं. Let everyone join. Then we'll
Okay, so audible. Okay, so we are in our last topic. We have to see two diagrams, component and deployment. So first we will see the component diagrams and then we will see the deployment diagrams. Fine. And everyone just be attentive in all the next classes. Okay, तुम लोग सरप्राइज टेस्ट लूंगा मैं क्लास में. क्लास मिस करोगे तो फिर सरप्राइज टेस्ट भी मिस होगा तो उसमें 0 रहेगा. तो जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट थिंग. एटलीस्ट एक असाइनमेंट और दूंगा और 2-3 टेस्ट और होंगे तुम लोग के बिफोर योर एंड सेम. इसमें सरप्राइज टेस्ट होंगे एक या दो. तो जस्ट बी अटेंटिव. पहले बता दिया. So now we are going to see the. So this is a part of structural diagrams. Behavioral diagrams सारे हो गए हमारे. Activity diagram हो गया, use case diagram हो गया, state machine diagrams हो गए, interaction diagrams हो गया. Interactions में we have seen sequence diagrams and communication diagrams. ये दोनों हमारे syllabus में नहीं है. In the structural diagrams we have seen package diagrams, class diagrams and object diagrams. Now we have two more deployment diagrams. So see, actually there is a very slight difference between a component diagram and a class diagram. That is a very, you can say, argumentable thing. क्योंकि जो क्लास का काम था, the same thing actually the components are also going to do here. The only difference that comes here is with respect to its syntax. This is the structure for component. Component doesn't mean any physical thing. ये hardware है, ये phone है, या कोई wire है. Component doesn't mean any physical system. They can be any piece of software also. They can be small pieces of software also. Okay, components. By components, it doesn't mean that they have. Can be any part of your software code. For example, if you were making a class for student, अगर आप class diagram ये था, उसमें अगर आप class बना रहे थे student नाम से, so that student can be a component also. Okay, so there is a very slight difference. What component was doing and what class was. Consider this component as a specialized class. बहुत ही अगर differentiation करना है तो बहुत ही basic differentiation that can come is this is a kind of specialized class. The important thing regarding components is they can be replaced and reused. इनको आप अपने पूरे component diagram में से you can remove any component with another component and you can reuse one component from one component diagram to the another component diagram also. For example, suppose you have component 1 and component 2 in this diagram. You can remove this component 2 and replace it with another component, or you can use this component 1 from this diagram in some another diagram also. So they are reusable. Class भी reusable होते हैं, ऐसी बात नहीं है. बहुत differentiation करने के लिए बस ऐसा कहा जा रहा है. The important thing here is that these two components, अगर suppose ये component 1 है, ये piece of code, suppose ये component order ID के लिए, this component is for the customer. Okay, so these two components, अब components कैसे interact करेंगे? Classes में तो आपको interaction directly हो सकता था, right? If you have two classes, दो classes को interact कैसे कर सकते हो? You can have association, you can have generalization, you can have aggregation also, you can have composition also. ये सारे relationships same हैं, directly they were interacting with each other. अगर component की बात करें, तो to interact two components, you must have an interface. No, यहाँ पे statement क्या बनती है? No two components can interact without any interface. You need to have one interface. Interface वो point है जहाँ पे दो components आपस में interact करेंगे. Is this thing clear, everyone? मतलब if you want to have any kind of interaction between component 1 and component 2, you need to have an interface between them. Fine? ऐसा क्यों चाहिए? आपको interface क्यों चाहिए? To make this property, देखो modularity क्या है? If you remember in the first module, we have a term known as modularity, coupling and cohesion जिसमें था. Right? Interface का यहाँ point ये है कि interface इस joint को loose रखता है. Okay, so that you can break this joint, you can add another component. Or you can break this joint or you can add another component. जरूरत पड़े तो आपस में भी interact कर सके. Okay, so interfaces are required basically to keep this joining loose and also to keep these components self-contained also. ताकि इनके बीच में जो joining है ये loose रहनी चाहिए. Loose का मतलब है तो जरूरत पड़े you can interact, जरूरत ना पड़े you should be self-contained, you should be self-sufficient. तो ये क्या चीज है? ये मॉड्यूलरिटी तो है.
You have to increase the cohesion and you have to decrease the coupling. Cohesion क्या है? आपस में सेल्फ कंटेन्ड होना चाहिए. कपलिंग क्या है? अगर जरूरत पड़े तो आपस में बात भी कर सके. दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ मॉड्युलैरिटी. हाउ ओके. सो अगर आपसे बोले दिस इज योर सॉफ्टवेयर, इफ दिस इज योर सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम है, सपोज ऑर्डर अमेजन के लिए, अगर इफ यू आर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर अ फ्लिपकार्ट सपोज, सॉफ्टवेयर का अगर एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू लें, उसमें क्या क्या चीजें, क्या क्या कंपोनेंट्स यू आर गोइंग टू यूज, दैट कैन बी अ क्लास डायग्राम. उसके क्लासेस बना सकते हैं हर पार्ट के लिए. ऑर्डर के लिए एक अलग क्लास बना सकते हैं, कस्टमर के लिए एक अलग क्लास बना सकते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए एक अलग क्लास बना सकते हैं. अगर क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट व्यू लें और थोड़ा सा हाई लेवल व्यू लें, एब्स्ट्रैक्शन यू अंडरस्टैंड ना, शोइंग ओनली द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर क्लास का भी एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू लें, क्लास को भी और ऊपर से देखें, दैट गिव्स यू कंपोनेंट डायग्राम. क्योंकि क्लास में क्या है, क्लास में यू हैव टू डिफाइन फंक्शंस आल्सो, यू हैव टू डिफाइन एट्रीब्यूट्स आल्सो. आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास में क्या एट्रीब्यूट्स हैं. डे भी आपको क्लास के फंक्शंस भी डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे void, run, एनीथिंग एक्सेट्रा. अगर ये भी आप थोड़ा मिस करना चाहते हो, ये भी आप नहीं चाहते हो कि इतना डिटेलिंग में दूं, you can go for the component diagrams. Is this point clear everyone? जो आपका यूएमएल में रिप्रेजेंटेशन है कंपोनेंट डायग्राम्स के लिए, तीन तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. फर्स्ट इज योर दिस रिप्रेजेंटेशन, सिंबल बना है. दिस इज नॉट अ लीगल सिंबल राइट नाउ बिकॉज ये यूएमएल आई थिंक 1.4 तक वाज वर्किंग. अभी जो आप लोग स्टार यूएमएल यूज करते हो या विजुअल पैराडिग्म यूज करते हो, दैट एवरीथिंग वर्क्स ऑन यूएमएल 2.0. सब अभी 2.0 पे वर्क कर रहा है. यूएमएल 1.4 तक ये एक्सेप्टेबल था. अब ऐसा इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज अगर यूएमएल 2.0 में आप यही डायग्राम यूज करोगे, तो दिस इज नॉट अ कंपोनेंट डायग्राम ओनली, दिस इज आल्सो अ क्लास सिंबल. ये क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है in UML 2.0. So in the exam I give you a statement that in UML 2.0 what does this symbol represent. पहला ऑप्शन है क्लास डायग्राम, दूसरा ऑप्शन है कंपोनेंट डायग्राम, तीसरा है एनी अदर थिंग, और चौथा है बोथ क्लास एंड कंपोनेंट. सो दिस इज व्हाट है ये, दिस इज ओनली कंपोनेंट डायग्राम, राइट. दिस इज बोथ. सो इस चीज का ध्यान रखना. ठीक है. तो UML 2.0 में also a class diagram along with the component diagram. If you want that no I should specifically make this as a component diagram, तो क्या कर सकते हो, जो चीज नहीं है उसको यूज करने के लिए स्टीरियोटाइप यूज करो. जो चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही है उसको एग्जिस्ट कराने के लिए you have to use stereotypes. So in the stereotype you can write component. तो अब ये बन गया खाली component diagram. Getting this point? Now this is a component diagram. Also this symbol, this is a representation of a class diagram, right? अगर नॉर्मली ऑर्डर सिस्टम लिखता है यहाँ पे और ये स्ट्रक्चर बनाता है, so this was the order system class, but I have used the stereotype known as component. So now this is a component. So these basically you have these three representations for a component diagram. Okay? कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए you can use any of them three. ये तो ऑब्वियस ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इसको जनरली लोग यूज नहीं करते हैं. अगर यही यूज करना है तो इसमें स्टीरियोटाइप यूज किया जाता है कंपोनेंट. एटलीस्ट पता रही है क्या चीज, ना डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है कंपोनेंट डायग्राम और क्लास डायग्राम में. अगर खाली ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, right? Now this interface which we have talked, that two components can interact only. ये इंटरफेस के दो तरीके हो सकते हैं. सेम चीज जो हमने क्लास डायग्राम में पढ़ी वही यहाँ पे देखने वाली. इफ यू रिमेंबर इन द क्लास डायग्राम आल्सो वी हैव सीन वन representation for interface like this and we have seen one representation for interface like this, right? अगर एक क्लास ये है क्लास 1 और एक क्लास ये थी सपोज क्लास 2 एंड आई हैव यूज्ड, इसका मतलब क्या था, क्लास 2 will realize class 1 will realize class 2, right? मतलब क्लास 2 में जो भी फंक्शंस हैं आपने क्लियर किए हैं पर डिफाइन नहीं किए हैं, वो डिफाइन होंगे यहाँ पे. इज द बॉस फिगर हियर. अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हो, वाइन ग्लास टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन का C1 क्लास यहाँ है, C2 क्लास यहाँ है, तो इसका मतलब है C1 क्लास नीड्स, C1 क्लास रिक्वायर्स C2 क्लास. मतलब C1 क्लास को होने के लिए C2 क्लास की जरूरत पड़ेगी. दोनों आपस में रिवर्स है. इफ यू रिमेंबर दिस थिंग वी हैव सीन इन द क्लास डायग्राम आल्सो, राइट? इसे वीडियो देख लेना वाला बोल. So the same thing is applicable in component diagrams also. Okay, you have basically two kinds of interfaces. Suppose this is my one component
So two types of interfaces are provided interface and required interface. Provided interface says, suppose this is provided interface P1. So this means that this component 2, जो भी component 2 है, this will implement. He is the boss figure. ये इसकी responsibility है कि ये implement करे आपका whatever interface this is. C2 will implement. अभी मैंने PPT में लिखा नहीं है. I'm just writing on this whiteboard only. Okay, so take a. You can watch the recording also again. Okay, so C2 component will implement P1 interface. Okay, or you can reread it like C2 will realize. ये सब हमने देखा है क्लास डायग्राम में, if you remember. थोड़ा याद तो आ रहा होगा, हल्का फुल्का है. These all things we have seen in the class diagram. We have seen these things. C2 will realize P. इसका एक लाइन में मतलब ये है. C2 will realize P1. मतलब P1 में जो भी functions हैं. For example, there is a function run. तो क्या आपने सिर्फ ऐसे डिक्लेयर करके छोड़ दिया. You haven't defined how it will work. Run कैसे काम करेगा? You haven't defined in define what component C2. This is the meaning of C2 will realize P1. Means whatever functions you have in P1, they will be realized by C2. This is known as provided interface. And another interface is your required interface. This looks like this inverted wine glass. Required interface को पढ़ने का दूसरा इसको रिवर्स में पढ़ना है. It's now component, ये component 1 जो है C1, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इस रिक्वायर्ड इंटरफेस को करने की, बल्कि C1 needs और C1 requires. देखो रिक्वायर्ड इंटरफेस नाम है ना, तो C1 will require this interface. C1 को इस इंटरफेस की जरूरत है अपना काम पूरा करने के लिए. So these two are reverse. They are inversely proportional. Okay, they are inversely proportional to each other. अगर आपका प्रोवाइडेड इंटरफेस है तो इसका मतलब है कि दिस कंपोनेंट C2, this C2 will realize this interface और this C2 इंटरफेस, ये C2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस इंटरफेस का काम करे जो भी इसको करवाना है. बट इफ यू आर यूजिंग अ रिक्वायर्ड इंटरफेस, दिस वन, इसका मतलब है C1 will need this interface. C1 को इस इंटरफेस की जरूरत है, ये कुछ नहीं कर सकता, इसको जरूरत है इस इंटरफेस की. Got this everyone? So we have seen these two kind of interfaces. Now to connect these two components, अगर इनको मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, so I can first जो आपका रिप्रेजेंटेशन वो ऐसा हो सकता है कि ये कंपोनेंट C1 है, इस कंपोनेंट C1 uses this interface, okay, and this is component C2 and this realizes this interface. अगर आपको अब इन दोनों कंपोनेंट के बीच में कोई इंटरेक्शन दिखाना है, if you want to show interaction between these two components, so you have to connect their interfaces. क्योंकि दो कंपोनेंट तभी बात कर सकते हैं जब उनके पास इंटरफेस है. If there is a statement that two components can interact without need to have interfaces between them. Okay, so इसका इंटरफेस है ये यूजर्स वाला, इसका इंटरफेस है ये रियलाइज वाला. इन दोनों इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए यू कैन हैव दिस डिपेंडेंसी एरो. डिपेंडेंसी एरो होता है नॉर्मल डॉटेड लाइन एरो, यू कैन कनेक्ट विद देम. अभी डिपेंडेंसी का एरो इस तरफ क्यों है? कैन एनीवन टेल मी? डिपेंडेंसी एरो इस तरफ भी तो हो सकता था, because this dependency arrows is basically showing you or saying you that component C1 depends on component C2. ऐसा कैसे हो गया भाई? Component C1 how depends on component C1? Yes. Yes, Uday. See, analyze this diagram carefully. Component diagram में थोड़ा सा analysis चाहिए बस. यहाँ पे this वाइन ग्लास वाला एरो, दिस यूजर्स वाला जो इंटरफेस है, रिक्वायर्ड इंटरफेस, ये क्या बोलता है? कंपोनेंट C1 को इस इंटरफेस की जरूरत है. सपोज ये इंटरफेस है I1, इस कंपोनेंट C1 को इस इंटरफेस I1 की जरूरत है. दिस C1 रिक्वायर्स I1. ये हो गई इसकी बात. ये डायग्राम क्या बोल रहा है? C2 will realize, this C2 will implement whatever this interface I2 needs. I2 needs. जब C2 इंप्लीमेंट करेगा तो इस पूरे डायग्राम में जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो C2 ही है खाली. C2 काम कर सकता है इसका, लेकिन C1 को जरूरत है इसकी, इसीलिए their dependency arrow is from here to here, that C1 uses this interface I1
ओके, C1 चाहिए इस इंटरफेस I1 को। अब आप इफ यू रिमेंबर इन द इंटरफेस वी हैव टॉक्ड कि इंटरफेस खुद से कुछ नहीं कर सकता। C1 को जरूरत है इस I1 इंटरफेस की, बट I1 इंटरफेस इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन इटसेल्फ। I1 को भी किसी की जरूरत है जो इसका काम कर सके। तो I1 को जरूरत है एक वाले इंटरफेस की, ये वाला इंटरफेस will be completed by C2. So indirectly, A tends to B, B tends to C. ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी के हिसाब से कंपोनेंट C1 क्योंकि C2 इंप्लीमेंट करेगा इसको, ये इंप्लीमेंट करेगा इसको, और इसकी जरूरत है इसको। At this point clearly again, आगे के डायग्राम्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे थोड़े से कंपोनेंट डायग्राम्स में। ओके, सो बेसिक्स यही है, ये क्लियर हो गया, सब क्लियर हो जाएगा। C2 will implement this will implement this because this is not sufficient, खुद से कुछ नहीं कर सकता ये, and this is needed by this. That is why directly component C1 is dependent on component C2. अगर ये एरो इधर बन जाएगा तो डायग्राम गलत हो जाएगा। ओवरऑल जिस्ट ये व्हाटएवर वी हैव रेड टिल नाउ 50-60% समझ आ गया तो ठीक है, अभी एक दो और एग्जांपल देंगे, क्लियर हो जाएगा। फाइन, दिक्कत किसी को? अब एक तरीका तो ये है दैट जो रिक्वायर्ड इंटरफेस, ये रिक्वायर्ड इंटरफेस है, प्रोवाइडेड इंटरफेस है सर्कुलर वाला। ऑलवेज रिमेंबर रिक्वायर्ड इंटरफेस से एरो प्रोवाइडेड इंटरफेस की तरफ ही जाएगा, ये फिक्स है, क्योंकि रिक्वायर्ड इंटरफेस खुद से कुछ नहीं कर सकता है, प्रोवाइडेड इंटरफेस की तरफ ही उसका एरो जाएगा। सो दिस इज फिक्स्ड, ये ऐसे ही जाना है, एकदम नहीं आ सकता। सो इफ आई गिव यू अ स्टेटमेंट दैट dependency arrow has to always go from required interface to provided interface, whether this statement is true or false. Dependency arrow in component diagram has always should go from this required interface. This would be a true statement. दूसरा तरीका ये है that you use this assembly line connector. कुछ नहीं है, बस बीच में जो आपका डिपेंडेंसी एरो था इसको हटा दिया है, इसको और इधर स्ट्रेच कर दिया, इसको और इधर स्ट्रेच कर दिया, दोनों को आपस में मिला दिया। सो दिस इज नोन एज असेंबली लाइन कनेक्टर। सिंबल नहीं है, बस इसको बोलने का तरीका अलग है, दैट दिस इज कॉल्ड एज असेंबली लाइन कनेक्टर। ओके, दिस इज अ मोर यू कैन से नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन। ओके, इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी वही है, एक लाइन में इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब भी यही है कि कंपोनेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन कंपोनेंट 2, दैट्स इट। व्हाई? बिकॉज़ कंपोनेंट 1 नीड्स दिस वाइन बॉटल वाला इंटरफेस, and this wine bottle wala interface is getting implemented by this circular or provided interface, and this provided interface कौन करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपोनेंट 2। so indirectly component 1 is dependent on component 2, क्योंकि यहाँ पे बॉस फिगर कंपोनेंट 2 ही है, इंप्लीमेंट करेगा इस इंटरफेस को, और ये इंटरफेस इंप्लीमेंट करेगा इस इंटरफेस को, और ये इंटरफेस की जरूरत है कंपोनेंट 1 को। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंपोनेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन component 2. So this is the second representation that you use assembly line connectors. ये required interface थोड़ा required interface को उसके सेंटर में लाके लगा दिया, बाकी दोनों इधर कंपोनेंट्स होंगे। सेम concepts we have seen with class diagram also. class diagram में भी दोनों को मिलाया था हमने, इंटरफेस पढ़ा था, तो I have told this. Now look at this diagram and tell me क्या किस पे डिपेंडेंट। इस डायग्राम को देखो, पढ़ो, थोड़ा सोचो क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि इन दोनों इंटरफेस का नाम अलग हो, दोनों इंटरफेस का नाम अलग हो, ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, ये भी I1 इंटरफेस हो, ये भी I1 इंटरफेस हो। इसको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है, दैट कंपोनेंट C1 नीड I1 interface is implemented by component C2. So indirectly component C1 is dependent on component, they can be same interfaces also, generally same ही होते हैं, क्योंकि इस एग्जांपल में अगर देखो, ये प्रोडक्ट लुकअप इज द नेम ऑफ द इंटरफेस, प्रोडक्ट लुकअप इज द नेम ऑफ द इंटरफेस। अब ये सर्कुलर वाला प्रोवाइडेड जो ये आपका रिक्वायर्ड इंटरफेस है, इसका नाम ही प्रोडक्ट लुकअप, दोनों इंटरफेस का नाम प्रोडक्ट
अगर इसको पढ़ना हो, so how you will read it? You have three components here basically: inventory system, order system, and customer data. If you see, this order system needs or uses this product lookup, and it also needs customer lookup. इस ऑर्डर सिस्टम कंपोनेंट को दोनों ही इंटरफेसेस की जरूरत है, प्रोडक्ट लुकअप की भी, कस्टमर लुकअप की। एवरीवन एग्रीज? प्रोडक्ट लुकअप है इंटरफेस, दिस इज इंप्लीमेंटेड बाय इन्वेंटरी सिस्टम। So I can say that this order system component is dependent on inventory system also, and this is dependent on customer database also. True. Because I told that required से dependency arrow provided की तरफ जाएगा, तो अगर ये required है, ये provided है, तो dependency arrow ऐसे जाएगा। अगर ये required है इस तरफ, if this is required and this is provided, so dependency arrow will go like this. Obviously, order system is dependent on customer database also. Is there any relationship between inventory system and customer database? क्या ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं? They are not interacting. Okay, you need to have an interface compulsorily. ऐसा मत सोचना कि इनडायरेक्टली यहां से यहां जंप कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। In the very first slide I have told you, to interact two components you need to have an interface between them. एक इंटरफेस होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, सो ये इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात खत्म। क्लियर है सबको अभी तक? Can a component be both required and provided? Yes, it can be. A component is not required and provided, Kshitij. A component can have required and provided interfaces. This is the right statement. Component required or provided नहीं है, required or provided तो interface है ना, this is interface. A component can have both provided interface also and both required interface also. मतलब ऐसा भी हो सकता है डायग्राम, अभी आगे एग्जांपल दिखाऊंगा। Suppose this is my component C1, हो सकता है इस तरफ इसका ये प्रोवाइडेड इंटरफेस है, दिस इज पॉसिबल। यहाँ पे तो दोनों ही रिक्वायर्ड हो गए ना, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है इस कंपोनेंट इस तरफ से किसी चीज की जरूरत है, लेकिन ये इस तरफ से किसी चीज को कर भी रहा है इंप्लीमेंट, दिस इज पॉसिबल। द कंपोनेंट नीड्स समथिंग फ्रॉम दिस साइड, इधर से कुछ आना चाहिए, ये यूजेस इंटरफेस यूज कर रहा है, बट अगर ये रिक्वायर्ड इंटरफेस यूज कर रहा है, but इसके पास प्रोवाइडेड भी हो सकता है कि ये किसी को प्रोवाइड भी कर रहा है सर्विसेज, तो इट इज पॉसिबल। लेकिन दिस डायग्राम इधर भी यूजेस था, इधर भी यूजेस था, तो इसको थोड़ा सा मैं रिवर्स कर दूं। इफ आई मेक दिस डायग्राम लाइक दिस, प्रोवाइडेड अब पहले है और उसके बाद ये यूजेस है। अब बताओ, so now this order system is dependent on inventory system and this customer database is dependent on order system. Agrees everyone? Order system component depends on inventory system component and customer database component depends on order system component. Okay, मतलब और okay, तो like this it can be shuffled up, दोनों हो सकते हैं। Fine. So till now you have seen two representations. अगर मैं ये आपको component diagram दे दूं तो इसका मतलब क्या है? What are you understanding with this? क्या समझ रहे हो? स्टेटमेंट बताओ, कौन किस पे डिपेंड है? टेल मी कौन डिपेंडेंट है? Licensing is depends on pet which has animal on pet। हाँ ठीक है, ओके फाइन।
तो सबसे पहली चीज, यू हैव टू कंपोनेंट्स हियर, राइट? यू हैव अ पेट कंपोनेंट एंड यू हैव अ लाइसेंसिंग एजेंसी कंपोनेंट. दिस पेट कंपोनेंट प्रोवाइड्स एनिमल इंटरफेस. मतलब एनिमल इंटरफेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जो भी एनिमल इंटरफेस को काम करना है वो ये करेगा, पेट इंटरफेस. एवरीवन फाइन? जो भी एनिमल इंटरफेस की प्रॉपर्टीज है दैट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय दिस पेट कंपोनेंट. ठीक है? फाइन ऑल ऑफ यू. Also this pet component needs this license interface. ये भी स्टेटमेंट सही है. This pet components needs this license interface or requires this license interface. And this license interface is implemented by this licensing agency component. Fine. So अभी तक क्या देखा? This pet component will implement this animal interface and requires, implement करेगा animal को and requires license interface. And this licensing agency component implements this license interface. So indirectly कौन किस पर डिपेंडेंट है? अगर नहीं भी समझ आया तो ऑब्वियसली सिंबल दिख रहा है. दिस इज यूजेस, दिस इज रिक्वायर्ड, तो डिपेंडेंसी एरो यहां से यहीं जाएगा. तो पेट कंपोनेंट इज डिपेंडेंट ऑन लाइसेंसिंग एजेंसी कंपोनेंट. फाइन, क्लियर एवरीवन? आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, यू टेल मी वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स. एनिमल इंटरफेस can't be implemented fully by this pet component without getting license interface. Getting license interface means this animal interface cannot be implement, क्योंकि एनिमल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना है इसी पेट कंपोनेंट को, यही करेगा. तो दिस पेट कंपोनेंट कैन नॉट फुल्ली इंप्लीमेंट दिस एनिमल इंटरफेस विदाउट गेटिंग दिस लाइसेंस इंटरफेस. सोच के बताओ ट्रू है या फॉल्स? क्या एनिमल को जितने काम करना उसकी लाइसेंस वाली जरूरत पड़ी? या ऐसा भी हो सकता है कि एनिमल को कुछ ऐसे काम करने हो जिसमें लाइसेंस की जरूरत ना पड़े? हो सकता है ना. सपोज एनिमल में एक रन फंक्शन है. सपोज इसको ऐसे सोचो, इंप्लीमेंट करना और यूज करने का मतलब क्या है कि अगर एनिमल को इंप्लीमेंट कर रहा है पेट कंपोनेंट, तो इसका मतलब रन कैसे काम कर रहा है दैट विल बी डिफाइंड इन पेट. हाउ रन फंक्शन इज वर्किंग दैट विल बी डिफाइंड इन पेट. अब हो सकता है, दिस इज पॉसिबल आल्सो, दिस इज नॉट पॉसिबल आल्सो. ऐसा हो सकता है कि इसके लिए इसको लाइसेंस की जरूरत पड़े, पढ़ने के लिए भी पड़े. तो इफ आई एम गिविंग द स्टेटमेंट दैट इट इज ऑलवेज नेसेसरी दैट एनिमल को लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, दिस इज फॉल्स. हमेशा जरूरी नहीं है. इट मे बी नेसेसरी, दैट इज ट्रू. व्हाट दिस? समझ आ गया? ओके, सो this representation we have seen, you can make a component और ये assembly line connector से बना सकते हैं, नहीं तो डिपेंडेंसी एरो यूज कर सकते हैं. दोनों का एक ही मतलब है, एक ही काम है. अगर असेंबली लाइन कनेक्टर भी बनाए तो इसका मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ तक डिपेंडेंसी एरो जा रहा है. दीज टू रिप्रेजेंटेशंस वी हैव सीन इन व्हिच टू कंपोनेंट्स कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर. थर्ड टाइप का रिप्रेजेंटेशन है दैट इज यूजिंग रियलाइजेशंस एंड डिपेंडेंसीज एरोस. कुछ नहीं, बस अभी तक जो ये काम कर रहा है क्लास डायग्राम में करवाया. फॉर एग्जांपल इफ यू सी दिस डायग्राम इटसेल्फ, यू हैव वन component A, you have one licensing agency component. This is the dependency arrow and this is the realization arrow in component diagram. ये जो arrow है, this is the realization arrow in component diagram और class diagram में भी ये inheritance का symbol होता है. Straight line with a box, with the arrow. This is the symbol for a generalization or inheritance in class diagram. अगर यही dotted line है with a box, this is realization. Okay, this class C1 realizes this interface I1. मतलब जो I1 की जो भी I1 wants to do that will be
implemented by C1. यही था ना realization when we have read. Realization मतलब वही है. C1 realizes interface C2. Okay, अगर इस just see this example. You have pet component and you have animal interface. Realizes animal interface. और pet component implements animal interface. So अगर ये pet component, अगर इस एनिमल को जब इंटरफेस पढ़ा था तो बताया इंटरफेस को रिप्रेजेंट करने के दो तीन तरीके, एक ये सर्कल वाला, एक ये वाला, एंड एक यू कैन मेक अ क्लास, और क्लास में यू कैन गिव अ स्टीरियोटाइप एज. So now what I'm doing is I'm using third representation for interface. The interface animal को I will not represent it with a circle. I will represent it with a class. इसमें स्टीरियोटाइप यूज करूंगा इंटरफेस. तो अब ये एनिमल जो है ये इंटरफेस ही है. That is implemented by pet. और इस सिंबल का मतलब है pet realizes animal interface. ठीक है. If you see this arrow, yes, इसका मतलब था pet uses this license interface. Pet needs this license interface. और इसको थर्ड तरीके से आप पढ़ सकते हो that pet depends on license interface. Obviously यहाँ से यहाँ तक भी डिपेंड कर रहा है. Obviously ये इस पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यहाँ तक डिपेंड कर रहा है. तो प्रोवाइडेड को you can substitute with realizes and uses को you can substitute with depends. बस इतना करना है. Fine. Now read this diagram once again. You have a animal interface, or that implements animal interface, and that pet class depends on license interface. That in itself is implemented or realized by licensing agency component. कुछ नहीं, अभी तक जो देखा वो सेम चीज है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका. पूछो, इसको पढ़ो, पूछो. Take 2-3 minutes, read this and then ask me. Real license is implementing licensing agency. नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अरे licensing agency is implementing ना this license interface. This realizes ना, ये क्या सर्कल अगर ये लाइसेंस इंटरफेस, इसका मतलब क्या है? दिस रियलाइजेस दिस लाइसेंस इंटरफेस ना, यही तो पढ़ा हमने. दिस इज अ बॉस. वही चीज तो यहाँ भी होगी. लाइसेंसिंग एजेंसी रियलाइजेस लाइसेंस इंटरफेस. लाइसेंस काम करेगा जो भी इस लाइसेंस क्लास को करना है वो. ऑब्वियसली नाम से भी पता चला है, पर नाम तो चलो ABCD भी दे सकते हैं. So that cannot be differentiated. This is what it means. Clear everyone? कोई डाउट है किसी को?
Now see this diagram. ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? Why we need this? अगर आप ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं इंटरफेसेस के लिए, यूजर्स इंटरफेस वाला या फिर प्रोवाइडेड इंटरफेस वाला, अब इसमें दिक्कत ये थी कि आप यू कैन नॉट डिफाइन फंक्शंस कि क्या फंक्शंस है इस एनिमल क्लास के जो इंप्लीमेंट कर रहा है पेट क्लास, क्या फंक्शंस है इस लाइसेंस क्लास की जो रिक्वायर्ड है बाय पेट क्लास, is not represented in this representation, right? ये बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट व्यू पे हम लोग अभी देख रहे हैं। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल व्यू चाहते हैं, इफ यू वांट टू राइट सम फंक्शंस हियर, एनिमल क्लास के ये फंक्शंस है, so that representation, for that reason only we have used this third kind of representation, realizes and dependency wala. See this example, you have a order component, you have a product component और एक इंटरफेस है प्रोडक्ट लुकअप। इस डायग्राम का मतलब क्या है? इस डायग्राम का मतलब क्या है? दैट दिस ऑर्डर कंपोनेंट depends on this product lookup interface, and this product lookup interface is realized by this product component. So अगर इसका मुझे वही सेम पिछले वाला डायग्राम बनाना तो कैसे बनेगा? दिस वुड हैव बीन अ ऑर्डर कंपोनेंट, ऑर्डर कंपोनेंट यूज कर रहा है प्रोडक्ट लुकअप इंटरफेस को ऑपरेट कर रहा है बाय प्रोडक्ट कंपोनेंट। ये ऐसा बनेगा डायग्राम, सबका ऐसे ही बन रहा है, किसी और कुछ और बन रहा है? Everyone getting the same thing? Fine. So indirectly, this order component was dependent on this product component. Fine. बस इसमें ये था कि इसमें जो ये प्रोडक्ट लुकअप इंटरफेस था आपका, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। दिस वाज अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट व्यू। अगर इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, दैट प्रोडक्ट लुकअप कंटेन्स गेट प्रोडक्ट फंक्शन, इसलिए आप इस इन्फॉर्मेशन सेम ही प्रोवाइड कर, ठीक है? इसके साथ साथ और भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इस डायग्राम को देखो, पढ़ो और बताओ कोई दिक्कत है तो। क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन किसको रियलाइज कर रहा है, कौन किसको यूज कर रहा है, रीड एवरीथिंग। बताओ फिर कोई डाउट है?
Okay, so this is your order component. This depends on product lookup interface, and this also depends on lookup interface. This product lookup interface is realized by product component, or you can say product component realizes this product lookup interface. मतलब इसमें जो ये आपने define कर दिया है this function, so just tell me whether this function get product, which component will implement this get product? Order करेगा, product करेगा, which component will implement this get product function? Product करेगा, right? Because product only realizes whatever is present here. Similarly with this is a realizes. Customer realizes customer lookup interface. So indirectly, order is dependent on product also. Order is dependent on customer also, right? Fine. यही है मतलब इसका. ठीक है. Now, till now we have seen that कितने representation देख लें. एक तो ये देख लें. This is uses. This is provided. This is one component. This is one component. So to interact two components, or when two components want to interact with each other, they can have, or they should have actually, this interface. जिसके दो टाइप हो सकते हैं, required and provided. That you can have dependency and realization relationships. दो ये तरीके देखे. Now, if suppose there is a this component, अगर इसी component के अंदर अगर हम mention करते हैं, ये component दिखा रहा है कि ये provided है and ये required है. We are showing this. अगर इसी component के अंदर लिख दें कि इसके कितने required हैं, इसके provided है, that is known as component compartments. But now see this example. ये एक example है जिसमें component 1 provides this interface and component 2 requires this interface. Okay, so component कौन किस पे dependent है? Component 1 2 पे या 2 1 पे? Is dependent on what? Dependent on component 1. Now you can show the same thing with the help of this. Okay, अब क्या करेंगे हम लोग? एक क्लास डायग्राम ही लेंगे. We will take a class diagram. उसमें इंटरफेस लिख देंगे कंपोनेंट, फिर यहाँ पे कंपोनेंट का नाम. जो सेकंड ब्लूप्रिंट्स लिखते थे क्लास की, वहां पे we will use another two stereotypes. एक यूज करेंगे प्रोवाइडेड इंटरफेस स्टीरियोटाइप, जितने प्रोवाइडेड इंटरफेस है वो यहाँ लिख देंगे. We will use required interface, जितने रिक्वायर्ड इंटरफेसेस हैं इस कंपोनेंट के, उसको यहाँ लिख देंगे. There is a third block also known as artifacts. Are basically a file implements that component. For example, अगर कोई गेम रन कर रहे हो तो उसमें .dll फाइल कभी-कभी मिसिंग होती है, because that DLL फाइल डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल बोलते हैं उसको. That file is needed to run that game. So no, पता ना कभी कोई गेम इंस्टॉल करो कोई DLL फाइल मिस हो गई. That DLL files are basically artifacts. They are necessary to implement one component. इधर .jar फाइल भी होती है. They are also necessary to implement one program, one application. और प्रोग्राम और एप्लीकेशन कुछ नहीं बल्कि कंपोनेंट ही है. आर्टिफैक्ट्स की थोड़ी सी बात और बाद में करेंगे. अभी के लिए आर्टिफैक्ट्स आर योर any file that is necessary to implement that component. piece of code है, उस कोड को होने के लिए पर्टिकुलर फाइल की जरूरत है, चाहे .dll हो चाहे .jar हो. तो ये तीन ब्लॉक्स आप बना सकते हो. फॉर एग्जांपल सी दिस. In this diagram I have a component known as client management. This is not a class, this is a component. कैसे पता? स्टीरियोटाइप से पता है. And I have columns here or rows here. I have used one stereotype known as provided interfaces, और उसके नीचे जो भी लिखा है that is a provided interface. इसका मतलब क्या है? कि क्लाइंट सर्विस क्या है? क्लाइंट सर्विस is a interface that will be implemented by this client management component. Yes or no? यही मतलब है इसका. Client service is a interface that will be implemented by this client management component. इसके कुछ required interfaces भी हैं. इसके कुछ required interfaces भी हैं, that is user authentication. So if I ask you what is this user authentication? Is this an attribute? Is this a function? Is this an interface? User authentication is an interface जिसकी जरूरत है
इस क्लाइंट मैनेजमेंट कंपोनेंट को। क्लाइंट मैनेजमेंट कंपोनेंट नीड्स और यूजेस दिस यूजर ऑथेंटिकेशन इंटरफेसेस। तो अगर इसका एक अलग डायग्राम बनाता, जैसे अभी तक पढ़ते हुए आ रहा हम हमारे थे अभी तक, क्लाइंट मैनेजमेंट कंपोनेंट, दिस इज योर क्लाइंट मैनेजमेंट कंपोनेंट, दिस provides this client services interface and this needs this user authentication interface। ये डायग्राम सही है? ये मतलब है ना इस चीज का, राइट? सो बस इस चीज को और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया और इसी के अंदर ही अब सारी चीजें मेंशन कर दी हैं। और ऑल्सो यू हैव थर्ड ब्लॉक दैट इज नोन एज आर्टिफैक्ट्स। इसका मतलब है क्लाइंट मैनेजमेंट डॉट जेआर, दिस इज अ फाइल दैट इज नीडेड बाय दिस क्लाइंट मैनेजमेंट सिस्टम टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन। इसका मतलब यही, आर्टिफैक्ट का सिंपल मतलब होता है वो फाइल्स, फिजिकल फाइल्स आपको जरूरत है। ओके, अगर ये इनमें से कोई ये फाइल अगर मिस हो गई तो आपका ये क्लाइंट मैनेजमेंट कंपोनेंट रन नहीं कर पाएगा, एरर्स आएंगे। नाउ सी अ बिग डायग्राम लाइक दिस। आई थिंक इट्स अ बिट ब्लर्ड। देखो मैं बता देता हूँ, दिस इज order system component, this is a customer database component, and this is a inventory system component। ऑर्डर सिस्टम कंपोनेंट में आपके पास रिक्वायर्ड इंटरफेसेस है, कस्टमर लुकअप एंड प्रोडक्ट लुकअप। और कस्टमर डेटाबेस में यू हैव अ प्रोवाइडेड इंटरफेस नोन एज कस्टमर लुकअप। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं देखूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑर्डर सिस्टम विल डिपेंड ऑन कस्टमर लुकअप? क्यों? क्योंकि कस्टमर ऑर्डर सिस्टम कंपोनेंट को किसकी जरूरत है? कस्टमर लुकअप की जरूरत है। कस्टमर लुकअप को प्रोवाइड कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? कस्टमर डेटाबेस कंपोनेंट। So this order system component is basically depends on this customer lookup. And similarly, the second required interface is your product lookup. Product lookup को provide कौन कर रहा है? Product lookup is provided by this inventory system component. So this order system component is basically dependent on customer database component also, inventory system component also. सही है गलत है? Fine. चलो अब इसके बाद we will continue in the next class. ठीक है? Two diagrams and we will see the deployment diagram. So thank you.